गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स और वेलकम टू द प्रीलिम्स बूस्टर सेशन। आज का पहला टॉपिक है मिनिमम टैक्स रूल्स ऑफ ईयू। ये आपके इंटरनेशनल रिलेशंस और इकोनॉमी दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। तो यूरोपियन यूनियन के जो मेंबर्स हैं उन्होंने मिनिमम 15% बिजनेसेस के ऊपर जो है बिग बिजनेसेस के ऊपर टैक्स इंप्लीमेंट करने के लिए जो है इन प्रिंसिपल एग्री कर लिया है। तो एक्चुअली आपको याद होगा कि ये G7 कंट्रीज़ ने कॉर्पोरेट मिनिमम टैक्स 15% होना चाहिए उसके लिए जो है अभी कुछ टाइम पहले आई थिंक जून के आसपास जो है वो डील साइन की थी। तो उसी की ही एक सब्सिक्वेंट डेवलपमेंट है ये। तो आपको पता है कि एप्पल, फेसबुक, गूगल जैसे टेक जायंट्स जो है वो बहुत इनॉर्मसली प्रॉफिट जो है वो डिराइव करते हैं डोमेस्टिक मार्केट से, लेकिन वो अपने हेडक्वार्टर को किसी ऐसी जगह बना लेते हैं जहाँ पर लो टैक्स होता है। तो उससे क्या होता है कि जो डोमेस्टिक कंट्रीज़ हैं उनको नुकसान होता है, रेवेन्यू लॉस होता है। तो इसीलिए लगभग 140 कंट्रीज़ ने नेगोशिएशन स्टार्ट किए थे अंडर OECD कि ऐसा कुछ होना चाहिए कि सारी कंट्रीज़ में मिनिमम इतना टैक्स तो ज़रूर होना चाहिए, ठीक है। तो 15% वो फिगर अनाउंस की गई थी। तो इससे होगा क्या कि जो है आपस में कंट्रीज़ जो है कम टैक्स का यूज़ करते हुए जो है आपस में कम्पीट करना कम कर देंगी, ठीक है। तो अब OECD ने दो जो है ऐसे पॉसिबल वेज बताए थे कि या तो जो कंट्रीज़ जो है वो प्रॉफिट्स को टैक्स करें ऑन द बेसिस ऑफ सेल। और इसका मतलब ये नहीं कि आप हेडक्वार्टर दूसरी कंट्री में खोल लो जहाँ पर 0% 2% टैक्स है, वहाँ पे आप टैक्स पे करके और सारा आप रेवेन्यू हमारी कंट्री से जो है वो लो, ठीक है। दूसरा, एक ग्लोबल मिनिमम कॉर्पोरेट टैक्स ही अगर आप ले आओ, है ना, सारी कंट्रीज़ को 15% कह दो कि इससे मिनिमम आप टैक्स नहीं रख सकते। तो अगर सारी कंट्रीज़ मिनिमम 15% टैक्स रखेंगी तो ऑफ कोर्स उससे जो है आपस में कम्पीट करना कब ख़त्म कर देंगी। तो एप्पल या गूगल के पास कोई रीज़न ही नहीं रह जाएगा कि किसी पर्टिकुलर कंट्री में जाके हेडक्वार्टर्स खोले, ठीक है। सो ग्लोबल टैक्स जो है ये पिलर 1 पिलर 2 अप्रोच यही है कि रिडिस्ट्रीब्यूशन को रोकने के लिए जो है उनको सेल्स के ऊपर जो है वो टैक्स देने को जो है कहो, जो ये कंपनीज़ हैं। दूसरे में यही कहा गया कि मिनिमम ग्लोबल टैक्स 15% कर दो, ठीक है। अब इसमें कौन सी फर्म्स को कवर करने की बात की गई थी? 20 बिलियन यूरोज़ या 23 बिलियन यूरो से ज़्यादा इनकी सेल है और उनका प्रॉफिट मार्जिन 10% से ऊपर है। तो मतलब अमेजॉन, गूगल, फेसबुक ऐसी कंट्रीज़ को जो है ये ऐसी कंपनीज़ को जो है हिट करने वाला है। अब कहा जा रहा है इसका इम्पैक्ट ये होगा कि लगभग $150 बिलियन एडिशनल ग्लोबल टैक्स रेवेन्यूज़ जो हैं वो जनरेट होंगे। और ग्लोबल इनइक्वालिटी जो आ रही है उसके ऑफ कोर्स काउंटर करने का हमको जो है वो एक मौका मिलेगा। अब कई कंट्रीज़ ऐसी हैं जैसे आयरलैंड लगा लो, फिर सिंगापुर, हांगकांग, ऐसी कंट्रीज़ जो हैं ये जानबूझकर जो है कॉर्पोरेट टैक्स को या तो ज़ीरो रखती हैं या 1% या 0.5% रखती हैं, ताकि क्या है कि जितनी बड़ी बड़ी कंपनीज़ हैं वो यहाँ पर आके उनके हेडक्वार्टर्स खोल लेती हैं और यहाँ पर अपना प्रॉफिट शिफ्ट करके जो है वो टैक्स सिर्फ 1.1% 0.5% भरती हैं। तो जब कंपटीशन नहीं होगा तो जो है वर्ल्ड जो है वो अच्छे से टैक्स जो हो कर पाएगा, ठीक है। तो अब ये जैसे क्या होता है कि आपस में कंट्रीज़ compete करती रहती हैं कि वहाँ पर टैक्स ज़्यादा है तो हम टैक्स अपना कम कर देते हैं ताकि हमारे यहाँ पर जो है बिजनेसेस आएँ, है ना। तो ये कंपटीशन को रोकना ज़रूरी है। अब ग्लोबल मिनिमम टैक्स की ज़रूरत क्यों है? कंट्रीज़ आपस में कम्पीट करती रहती हैं। जब आपस में कम्पीट करती रहती हैं तो ग्लोबल जो कॉर्पोरेट टैक्स हैं वो 40% होते थे जो 1980s में, वो कम होकर 25% रह गए हैं 2020 में। तो सिंपली प्रॉफिट्स को मूव करने से जो है ये कंपनीज़ जो हैं अपनी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है सोसाइटी की उनको उसको इवेड कर देती हैं। सो नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं ऑर्गन डोनेशंस। सोशल इश्यूज़ के लिए इंपॉर्टेंट है। तो आपके पार्लियामेंट में यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री ने बताया कि 2020 में डिप आया था ऑर्गन डोनेशंस में, लेकिन अब दोबारा से जो है 2021 में वो पिकअप हो चुके हैं। लेकिन नंबर ऑफ डिसीज़ डोनेशंस जो है वो अभी भी कम है। डिसीज़ डोनेशन क्या होता है? मतलब कि जैसे लोग मर जाते हैं तो उनके जो डोनेशन जो उनके ऑर्गन्स होते हैं उसको आप जैसे कुछ ऐसे जो ऑर्गन्स होते हैं ना, जैसे आपका लंग्स हो गया या हार्ट हो गया, ये तो सिर्फ मरने पर ही लिए जा सकते हैं। तो उसकी जो डोनेशन है वो कम हो रही है बिकॉज फैमिली डिनाई कर देती है ना। या फिर इवन जो है पीपल भी विलिंग नहीं होते हैं कि हम मरने के बाद अपनी बॉडी को डोनेट करें। तो लगभग आपके किडनी, लिवर, हार्ट, लंग्स और पैंक्रियाज जो है वो सबसे फेमस हैं डोनेशंस के लिए। लगभग 2021 के अगर हम आंकड़े देखें तो हाईएस्ट रहे हैं 5 ईयर्स में ऑर्गन डोनेशन। और किडनी और लिवर सबसे ज़्यादा जो है वो डोनेट किए जा रहे हैं बाय लिविंग फैमिली मेम्बर्स। अगर हम टॉप 5 जो है स्टेट्स देखें, तेलंगाना,
तमिलनाडु, महाराष्ट्र, गुजरात और कर्नाटका, यहाँ पर लगभग 85% ऑफ द जो है ऑर्गन डोनेशन होता है। और इंडिया में जो ऑर्गन डोनेशन का रेट है वो 0.52 पर मिलियन पॉपुलेशन है। लेकिन अगर आप वर्ल्ड में देखें तो स्पेन जो है वहाँ पर सबसे ज़्यादा हाईएस्ट पॉपुलेशन जो है वो ऑर्गन डोनेट करती है। अब उसका रीज़न भी आगे देखेंगे कि क्यों ऐसा है, ठीक है। तो हमको क्यों ज़रूरत है ऑर्गन डोनेशन को बढ़ाने के लिए? क्योंकि 1.5 से 2 लाख पर्सन्स जो है जिनको किडनी ट्रांसप्लांट की ज़रूरत है, उसमें से सिर्फ 8,000 को मिल पाती है। और अगर हम यही देखें कि हार्ट और लंग्स जो हैं वो डिसीज डोनर से ऑफ कोर्स सिर्फ डोनेट कर सकते हैं, कोई लिविंग पर्सन तो डोनेट नहीं कर सकता। तो फिर वो जब अगर डिसीज पर्सन डोनेट ही नहीं करेंगे, उनकी फैमिलीज जो है कंसेंट ही नहीं देंगी, तो उसके लिए जो है हमको हमारे बहुत से पेशेंट जो है वो उनकी लाइफ खतरे में आ सकती है जिनको डोनेशन की ज़रूरत है। तो हमारे बहुत ही जो है ह्यूमन जो है रिसोर्सेज वेस्ट हो रहे हैं जस्ट बिकॉज ऐसे जो प्रेशियस आपके रिसोर्स हैं, जैसे कि जो आपके ऑर्गन्स हैं, वो आपके मरने के बाद जो है वो ऑफ कोर्स किसी और को नहीं मिल पाते हैं। लगभग 1.5 लाख पर्सन जो है वो रोड एक्सीडेंट में हर साल उनकी डेथ होती है। लेकिन जिनके ऑफ कोर्स आप डोनेट ऑर्गन्स को डोनेट कर सकते हो आराम से, लेकिन फिर भी जो है because of several reasons, most of them of course are societal reasons और also legislation में भी ये प्रॉब्लम है, तो उसकी वजह से जो है हम डोनेट नहीं कर पाते हैं, ठीक है। तो अब रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, अब हम देखते हैं कि क्या फ़र्क है इंडिया और स्पेन में इस कंटेक्स्ट में। तो 1994 में हम ट्रांसप्लांटेशन ऑफ ह्यूमन ऑर्गन्स एक्ट लेके आए और इसमें कमर्शलाइजेशन ऑफ ऑर्गन्स को एक पनिशेबल ऑफेंस बनाया गया। नेशनल ऑर्गन एंड टिश्यू ट्रांसप्लांट ऑर्गेनाइजेशन भी बनाई गई मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर द्वारा, जो कि सारी एक्टिविटीज़ को कोऑर्डिनेट करती थी विद रिस्पेक्ट टू ऑर्गन डोनेशन एट नेशनल लेवल। लेकिन लो ऑर्गन डोनेशन क्यों है और स्पेन में ऐसा ज़्यादा क्यों है, ऑफ कोर्स ये भी देख लेते हैं। इंडिया में एक पर्सन को अपने आप को ऑर्गन डोनर जो है वो रजिस्टर करना पड़ता है, और फिर जब वो डिसीज़ हो जाता है तो उसकी फैमिली को कंसेंट भी देना पड़ता है। अगर मैंने डोनेशन के लिए अप्लाई किया भी हुआ है कि अगर मैं मरूंगा तो मेरी ऑर्गन को आप डोनेट कर दो, लेकिन जब मेरे मरने के बाद अगर मेरी फैमिली जो है कंसेंट नहीं देती है तो उसका डोनेशन जो है ऑर्गन डोनेशन नहीं ली जा सकती। वेयर एज स्पेन में एक ऑप्ट आउट सिस्टम है, वहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट सारी पॉपुलेशन जो है उनका ऑर्गन डोनेट करने के लिए जो है वो अप्रूवल जो है गवर्नमेंट ने कहा है कि ये सब डोनेट करना चाहते हैं, अनटिल और अनलेस आप खुद जाकर जो है हॉस्पिटल में एक फॉर्म नहीं साइन करते कि भाई नहीं मैं तो डोनेट नहीं करना चाहता। तो हमारा ह्यूमन साइकोलॉजी है ना कि हम ऐसे नहीं जाएंगे, क्योंकि हम स्पेसिफिकली जाकर नहीं कहेंगे कि हम अपने ऑर्गन्स को डोनेट करना चाहते हैं, इसीलिए स्पेन में ये ज़्यादा ऑर्गन डोनेशन ज़्यादा होता है। ट्रांसप्लांट कोऑर्डिनेटर, हमारे इंडिया में जो है मेडिकली क्वालिफाइड ट्रांसप्लांट कोऑर्डिनेटर भी नहीं है, जो आपका पूरा फैसिलिटेशन करते हैं जबकि एक पर्सन डिजीज़ हो जाता है तो उसकी जो है फैमिली के साथ कोऑर्डिनेट करते हैं कि कैसे ऑर्गन जो है डोनेट किया जाएगा। फिर ट्रांसपोर्ट का इंफ्रास्ट्रक्चर भी ठीक नहीं है। गुड ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत है, क्योंकि ऑर्गन डोनेशन के लिए आपको ग्रीन कॉरिडोर्स चाहिए होते हैं ट्रैफिक में। ये नहीं कि आप ऑर्गन लेके जा रहे हो और ट्रैफिक में फंसे हुए हो, तो उसके लिए ग्रीन कॉरिडोर्स की ज़रूरत होती है और उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर की भी इंप्रूवमेंट की ज़रूरत होती है। दूसरा, आपकी अवेयरनेस भी बहुत कम है, लोगों को लोग अवेयर ही नहीं है कि ऑर्गन ट्रांसप्लांट कितनी इंपॉर्टेंट चीज़ है, और जो है अपने आप को लोग इसलिए रजिस्टर भी नहीं करते हैं एज डोनर्स, ठीक है। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं, एंटी मैरीटाइम पैरिस बिल ऑफ 2019 गवर्नेंस के लिए इंपॉर्टेंट है। लोकसभा में रिसेंटली यूनानिमसली, ठीक है, एक आपको बॉनहॉमी देखने को मिलेगी कि यूनानिमसली इस बिल को पास किया गया, एंटी मैरीटाइम पैरिस बिल 2019 को। तो 1982 यूएन क्लॉज जो है वो पायरेसी को डिफाइन करता है कि कोई भी एक्ट ऑफ वायलेंस, डिटेंशन या डिस्ट्रक्शन कम अगर कर दिया गया है किसी प्राइवेट आपके ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए अगेंस्ट पर्सनस या प्रॉपर्टी ऑन बोर्ड और ऑन अ शिप, चाहे वो हाई सीज़ में हो चाहे वो किसी भी जो है स्टेट की जुरिस्डिक्शन में हो, तो उसको हम पायरेसी कहते हैं। तो इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन ने कहा कि 84 एक्ट्स ऑफ पायरेसी हुए हैं 2018 और 19 के टाइम पर, और इंडिया में डोमेस्टिक लेजिस्लेशन कोई है ही नहीं पायरेसी से डील करने के लिए। हम अभी तक जो है आर्म्ड रॉबरी के जो प्रोविजंस हैं आईपीसी में वो लगाते आ रहे हैं, लेकिन इसमें भी प्रॉब्लम क्या है, हमारा आईपीसी सिर्फ सोवरेनिटी ऑफ इंडिया में ही लगता है, देश के बाहर तो लग नहीं सकता। तो इसीलिए जो है हम सिर्फ अपने टेरिटोरियल वाटर्स में ही जो है इसको जो है वो हम इस इंसिडेंट्स को इम्प्लीकेट कर पाते हैं। तो 1995 में इंडिया ने यूएन क्लॉज को रेटिफाई किया, उसकी वजह से इंडिया को एंटी मैरीटाइम पैरिसी बिल 2019 लाना पड़ा। अब इसमें बिल में प्रोविजंस क्या हैं, अब हम हाई सीज़ में जो हमारी जुरिस्डिक्शन से भी बाहर हैं वहाँ पर भी अगर इंडियन अथॉरिटीज़ किसी इंडियंस के साथ या जो है अगर कोई फॉरेनर्स के साथ भी अगर हम जो है पायरेसी होती है तो हम उसको जो है वो इम्प्लीकेट कर पाएंगे। और पायरेसी को भी डिफ़ाइन करता है वही जो आपकी यूएन क्लॉज की डेफिनेशन के साथ जो है वो अलाइन करता है। पायरेसी में
इंसाइट करना या इंटेंशनली फैसिलिटेट करना ऐसे वायलेंस को, उसको भी जो है वो एक तरह से पायरेसी में डाला गया है। 14 साल तक की जेल या फिर लाइफ इम्प्रिजनमेंट और इवन डेथ पेनल्टी भी जो है वो इसके अंदर रखी गई है। अब इसमें इश्यूज़ क्या हैं? मैंडेटरी डेथ पेनल्टी, हमारा सुप्रीम कोर्ट कहता है कि किसी भी लॉ में आप मैंडेटरी डेथ पेनल्टी नहीं डाल सकते, लेकिन इसमें डाली गई है ना? दूसरा, ओवरलैपिंग सर्कमस्टांसेस। अब इसमें ये कहा है कि अगर आप कमिट करते हो कोई एक्ट ऑफ पायरेसी तो आपको लाइफ इम्प्रिजनमेंट हो सकती है, और अगर आप पार्टिसिपेट करते हो तो आपको 14 साल की जेल हो सकती है। तो अब ये दोनों में कैसे डिसाइड होगा कि पर्सन ने पार्टिसिपेट किया है या फिर उसने खुद एक्ट कमिट किया है, ठीक है? तो अब ये ऑफ कोर्स, क्योंकि ये ओवरलैपिंग होती है ना, इसमें पार्टिसिपेट करना और जो है खुद कमिट करना, इसमें ओवरलैपिंग आ रही है। तो अब इसमें अनक्लियर है कि पनिशमेंट को कैसे डिटर्मिन किया जाएगा। सो नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं हिस्टोरिकल बायोडाइवर्सिटी डील, ठीक है? तो एक नॉट हिस्टोरिकल बट हिस्टोरिक, ठीक है? सो हिस्टोरिक बायोडाइवर्सिटी डील इन्वायरमेंट के लिए टॉपिक इंपॉर्टेंट है। तो 190 कंट्रीज़ ने जो है वो एग्री किया है यूएन बायोडाइवर्सिटी समिट में कि हम 30% तक जो है प्लानट को बचाएंगे 2030 तक। तो इसको कुनमिंग मॉन्ट्रियल ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क भी कहा जा रहा है। अब इसमें कहा गया है कि हम हर साल जो है $20 बिलियन एनुअली जो है एटलीस्ट हम मोबिलाइज़ करेंगे, और 2030 तक हम 200 बिलियन तक जो है वो मोबिलाइज़ कर लेंगे। और जो है उससे हम इवन जो है गवर्नमेंट की सब्सिडीज़ जो है आपकी मिल रही हैं, जो कि जिससे बायोडाइवर्सिटी को लॉस हो रहा है, उसको हम $500 बिलियन एनुअली कम करने की कोशिश करेंगे। और हर 5 साल बाद रिपोर्ट करेंगे कि क्या प्रोग्रेस रही है इस कुनमिंग मॉन्ट्रियल ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क पर, ठीक है? 23 टारगेट दिए गए हैं 2030 तक अचीव करने हैं। 30% लैंड, 30% कोस्टल और मरीन एरियाज़ को प्रोटेक्ट करना है 2030 तक। 30% डिग्रेडेड लैंड्स और वाटर्स को थ्रू आउट द डेकेड अचीव हम जो है वो रिस्टोर करना चाहते हैं। फिर लार्ज कंपनीज़ और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को कहा गया है कि आप के जो भी ऑपरेशंस करते हो, सप्लाई चेन जो आपके यहाँ होती हैं, जो उसको आपको रिपोर्ट करना है कि क्या वो ऑफ कोर्स कुछ हमारी बायोडाइवर्सिटी को लॉस कर रहे हैं कि नहीं। फिर सब्सिडाइज, जिससे कि हमारी बायोडाइवर्सिटी डिप्लीट हो रही है, 2025 तक उसको जो है हम कम करेंगे, लगभग $500 बिलियन पर ईयर 2030 तक उसको हम कम करने का जो है वो हमने सोचा है। फिर जो पेस्टिसाइड्स या हाईली हजार्डस केमिकल्स हैं, जिसको याद होगा आपको, अभी हमने कुछ दिन पहले डिस्कस किया था कि 2/3 तक कम करने को कहा गया था, लेकिन उसको जो है फाइनल एग्रीमेंट में सिर्फ 1/2 कम करने को कहा है। अब यूएन बायोडाइवर्सिटी कॉन्फ्रेंस जो है आपकी, कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, इसी में ही साइन हुआ था। 2050 तक हमने लिविंग इन हार्मनी विद नेचर जो है वो करना चाहते हैं हम। रियो अर्थ समिट में 1992 में इसको हमने सीबीडी को साइन किया था। फर्स्ट कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज जो है आपकी यूएन बायोडाइवर्सिटी कॉन्फ्रेंस जो है वो बहामास में हुई थी 1994 में। अब अभी तक हमने इसमें क्या अचीव किया है? पहला तो आपका इनकॉर्पोरेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी वैल्यूज़, जो हमारी नेशनल अकाउंटिंग सिस्टम से, याद होगा आपको, एनकेव्स हमने लास्ट ईयर पढ़ा था। एक नेशनल अकाउंटिंग सिस्टम बनाया गया है कि हमारी इकोसिस्टम की कितनी जो है हमारी कैपिटल है। तो एक तरह से बायोडाइवर्सिटी की भी वैल्यू हम जो है कर रहे हैं। फिर रेट ऑफ डिफॉरेस्टेशन भी लगभग 1/3 कम हुआ है 2020 में, अगर हम पिछले डेकेड से कंपेयर करें। फाइनेंशियल रिसोर्सेज भी डबल जो है हमने कमिट किए हैं बायोडाइवर्सिटी को सेव करने के लिए। कार्टेजना प्रोटोकॉल साइन किया है, नगोया प्रोटोकॉल साइन किया है, एची टारगेट्स को भी साइन किया था। ऑफकोर्स चाहे हमने अचीव नहीं कर पाए उसको सारी कंट्रीज़ बट एक मूव हुआ था उसकी तरफ, ठीक है? अब लगभग 196 कंट्रीज़ ने टोटल इसको जो है वो कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी को जो है वो को साइन किया है, लेकिन यूएस इसका मेंबर नहीं है, ठीक है? तो नेशनल बायोडाइवर्सिटी स्ट्रेटजीज और एक्शन प्लान्स भी हमने जो है अपनी अपनी कंट्रीज़ जो है वो साइन करते बताती हैं, जैसे हमारी नेशनली डिटरमाइंड कॉन्ट्रीब्यूशंस होते हैं क्लाइमेट चेंज के कंटेक्स्ट में, और बताते हैं कि कैसे जो हैं वो इसको अचीव करने वाले हैं। अब अगर हम कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़ 15 की देखें, COP 15, तो फर्स्ट पार्ट जो था इसका वो जो चाइना में होना था, लेकिन कोविड हो गया तो उसको हमने ऑनलाइन किया। जो सेकंड पार्ट है उसका मॉन्ट्रियल में कनाडा में अभी रिसेंटली चल रहा है, ठीक है? नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट। एनवायरनमेंट के लिए टॉपिक इंपॉर्टेंट है। तो क्योंकि जो है दिल्ली की एयर क्वालिटी बहुत ही पुअर हो गई है, लगभग 410 सिवियर कैटेगरी में पहुंच गई है, तो इसके लिए जो है ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान जो है वो उसके उसके जो है मद्देनज़र हम एक्शन ले रहे हैं। तो ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान क्या होता है? सेट ऑफ इमरजेंसी मेजर्स हैं, 2017 से मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट ने जो है वो नोटिफाई किए हैं, जिसमें स्टेजेस के अलावा स्टेजेस के मुताबिक, मतलब स्टेज 1 ऐसा होगा कि जब आपकी एयर क्वालिटी पुअर कैटेगरी में आ गई 201 से 300, जैसे अब हम देख रहे हैं कि सिवियर कैटेगरी में पहुंच चुकी है एयर क्वालिटी, तो उसके बेसिस पर जो है जो भी आपके मेजर्स लेने हैं वो आपकी गवर्नमेंट लेती है।
तो कमीशन ऑन एयर क्वालिटी मैनेजमेंट क्या है? एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, एक सेक्रेटरी या चीफ सेक्रेटरी लेवल के गवर्नमेंट ऑफिशियल इसको हेड करते हैं, और इसके 5 एक्स ऑफिशियल मेंबर्स भी होते हैं, चीफ सेक्रेटरीज ऑफ जो है या फिर सेक्रेटरीज ऑफ दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश। 3 टेक्निकल मेंबर्स भी होते हैं, एनजीओ के भी 3 मेंबर्स होते हैं, और सीपीसीबी सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, इसरो और नीति आयोग के भी इसमें मेंबर होते हैं। तो बेसिकली एयर क्वालिटी को मॉनिटर करना, रिसर्च करना कि कैसे बेटर कर सकते हैं एयर क्वालिटी को आपके, और जो है इंस्पेक्शन और रेगुलेशन का काम भी ये करते हैं। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं श्योरिटी बॉन्ड इंश्योरेंस, इकोनॉमी के लिए टॉपिक इंपॉर्टेंट है। तो यूनियन मिनिस्टर फॉर रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज ने रिसेंटली इंडिया का फर्स्ट एवर श्योरिटी बॉन्ड इंश्योरेंस प्रोडक्ट जो है वो लॉन्च किया है। तो इसमें होगा क्या कि समझ लो, एग्जाम्पल लेते हैं कि जो हमारा अब इसमें प्रिंसिपल कौन होगा, जो आपका कॉन्ट्रैक्टर है जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट को बना रहा है, वो ये बॉन्ड को परचेज करेगा और कहेगा कि हाँ मैं ये ऑब्लिगेशन करूँगा पूरी, और आप मेरे को जब ये ऑब्लिगेशन मैं पूरी कर दूंगा तो आपको मेरे को जो जब मैं काम पूरा करके दे दूंगा तो आपको मुझे पैसे देने हैं, ठीक है। गवर्नमेंट को ऑफ कोर्स कहेगा ये। और श्योरिटी श्योरिटी कौन देगी? इंश्योरेंस कंपनी। इंश्योरेंस कंपनी कहेगी ठीक है, ये जो प्रिंसिपल है, जो ये कॉन्ट्रैक्टर है, गवर्नमेंट को कहेगी जो इंश्योरेंस कंपनी की, ये जो प्रिंसिपल है, जो ये कॉन्ट्रैक्टर है, ये अपना पूरा प्रोजेक्ट बनाकर आपको देगा, नहीं देगा तो मैं आपको पैसे देती हूँ, ठीक है। ओब्लाइजी कौन होगा? ओब्लाइजी जो है बेनिफिट्स जिसको मिल रहे हैं, जो आपकी गवर्नमेंट है, चाहे लोकल हो, स्टेट हो या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट हो, उसको बेनिफिट मिल रहे हैं क्योंकि उसको कॉन्ट्रैक्टर काम जो है काम करके देगा या नहीं देगा, उसका काम इंश्योर हो रहा है, ठीक है। तो ओब्लाइजी होगी आपकी गवर्नमेंट कि उसको काम पूरा करके मिलेगा, नहीं कर पाएगा प्रिंसिपल या कॉन्ट्रैक्टर तो ऑफकोर्स इंश्योरेंस कंपनी गवर्नमेंट को पैसा देगी। अब इसके एडवांटेजेस यही हैं, सिक्योरिटी अरेंजमेंट आ गया इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के लिए, कॉन्ट्रैक्टर को भी बेनिफिट है, प्रिंसिपल को भी बेनिफिट है इससे, ठीक है। तो प्रिंसिपल जो है, और ये प्रोडक्ट जो है एक कॉन्ट्रैक्ट को गारंटी दे देता है, जो आपके प्रिंसिपल और ऑब्लाइजी में कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है उसमें इंश्योरेंस कंपनी जब आ जाती है तो उससे गारंटी मिल जाती है कि हाँ भाई अगर ये प्रोजेक्ट नहीं कंप्लीट हुआ तो पैसा मिलेगा, ठीक है। तो अब इससे क्या है कि कॉन्ट्रैक्टर के जो है डेट्स भी रिड्यूस होते हैं, कि उनको पता होता है कि हम अगर जो है प्रोजेक्ट्स पूरा करेंगे तब हमको पैसा ज़रूर मिलेगा, ऑफकोर्स तब तो गवर्नमेंट देगी ही। और इन केस अगर जो है प्रोजेक्ट नहीं पूरा होता तो हमें पे नहीं करना है, किसी भी वजह से अगर प्रोजेक्ट नहीं पूरा होता तो हमें नहीं पे करना है, इंश्योरेंस कंपनी पे करेगी, ठीक है। सो नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं, INS वागीर, सिक्योरिटी के लिए टॉपिक इंपॉर्टेंट है। तो 5th सबमरीन ऑफ प्रोजेक्ट 75 जो है वो आपकी INS वागीर जो है वो डिलीवर कर दी गई है इंडियन नेवी को। वागीर जो है उसको नवंबर 2020 में लॉन्च किया गया था, और 2022 में इसने सी ट्रायल्स जो हैं वो कमेंस कर दिए थे। सुपीरियर स्टेल्थ फीचर्स हैं इसमें। वागशीर जो है वो अब रह गई है सिर्फ, एंड बाय एंड 2023 तक जो है वो भी डिलीवर कर दी जाएगी प्रोजेक्ट 75 में, जो आपका टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र पर चल रहा है नेवल ग्रुप ऑफ फ्रांस से। तो अब जो है लगभग सारी शिप्स जो हैं इस प्रोजेक्ट 75 की जो है वो डिलीवर हो गई हैं, बस एक रह गई है, एंड बाय एंड 2023 ये भी जो है वो कंप्लीट हो जाएगी। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं, नेशनल टेस्टिंग हाउस, इकोनॉमी के लिए इंपॉर्टेंट है, गवर्नेंस के लिए भी इंपॉर्टेंट है। तो नेशनल टेस्टिंग हाउस जो है वो ईवीज़ और ईवी चार्जिंग सिस्टम्स के लिए भी जो है अपनी फैसिलिटीज़ में टेस्टिंग करना शुरू करेगा मुंबई और कोलकाता में। 1912 में इसको बनाया गया था गवर्नमेंट टेस्ट हाउस, एज गवर्नमेंट टेस्ट हाउस इन कैलकाटा। करंटली ये मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन के अंडर आता है, बेसिकली डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स के अंडर आता है। इवन ये अब खुद को इन्होंने गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस में एज अ सर्विस प्रोवाइडर भी रजिस्टर किया हुआ है एज अ टेस्टिंग एंड कैलिब्रेशन सर्विस, ठीक है। सो अपार्ट फ्रॉम दैट ये वाटर टेस्टिंग, फर्टिलाइजर टेस्टिंग, ये सब काम ऑलरेडी करता ही रहता है, ठीक है। सो नाउ लेट अस सी ऑल दीज टॉपिक्स इन इंग्लिश। So the first topic is minimum tax rules of EU. So this topic is important both for your international relations and for your economy section. So you know that you may be remembering that in June 2022 we discussed that the G7 countries, and apart from them certain other countries, they have agreed on a minimum global corporate tax of 15%. So what was the need of bringing such tax? So actually you know that Apple, Facebook, Google, such tech giants, they profit enormously from the domestic markets, whereas they register themselves or they open their headquarters in other countries so that they don't have to pay tax in the
in their home country, okay, or they're in their domestic jurisdictions. So almost 140 countries started negotiations under OECD with respect to this particular agreement, and the proposal was twofold. So in so there was twofold proposal, and it said that countries who would be having excuse me, so the countries who would be having who would be so first of course is rights to tax profits. So countries were allowed that these companies, let's suppose that Apple earns about $100 billion from India, but what they do is they open their headquarters in countries like Singapore, Hong Kong, or even Dubai, so where the corporate tax is almost zero. So what they do is they deliberately try to evade tax by transferring their taxes to other countries, okay. So that's why of course uh, it was asked, it was suggested that these countries would be allowed to tax these companies on the basis of the sales, and not on the basis of profits that they generally shift to other countries. Similarly, a global minimum corporate tax rate was also being discussed, whereby what if all the countries have at least 15% tax rate, then these countries would stop competing with each other in that case, okay. So for that, of course, a global minimum corporate tax rate was also discussed. So what is the pillar one? Redistribution of profits must be stopped, because we can start now taxing the actual sales of these companies. Similarly, the pillar two is bringing out a minimum of 15% tax, so that the countries would stop competing with each other, and these companies would have no incentive to shift their profits to other jurisdictions. So uh, any firm which is having $23 billion worth of global sales, and also profit margins above 10% would be covered under this deal. So basically digital giants like Amazon, Facebook, and Google would be covered under this particular act. So this was the deal. And what is the impact of this deal? So of course, you know that currently the countries, they compete with each other. They uh, they start competing with each other to by making low taxes, and so that these companies would shift their tax their jurisdictions, or into or their headquarters into these jurisdictions. So basically, it will generate about $150 billion in additional global tax revenues annually, and it will also help counter rising global inequality at a time when we need it the most. So the threat of tax competition, which will also be eliminated, but of course there are certain other realms to it also, because if the government stop competing with each other on tax rates, of course then the citizens would suffer, okay. So what is the need for a global minimum tax? So of course countries often compete with each other since 1980s, when there was global tax rates were about 40% average. It has now fallen to 25% in 2020, and these companies just simply move their profits around, and they evade taxes. So the next topic is organ donations. So this topic is important for your social issues, as per the data shared in Parliament by Union Health Ministry. After a dip in 2020, the organ donations have picked up again in 2021. The number of deceased donations has remained lower, but that is a cause of concern, because there are certain organs like heart and lungs which can only be donated after the person's death. Okay, so that's why it is a cause of concern for us. So what is the status in India? So generally in India, kidney, liver, heart, lungs, and pancreas are harvested for organ donation. And in 2021, the figure has reached the highest in the last 5 years. Mostly the kidney and liver is transferred or donated by living family members to their, of course, family members only. And Telangana, Tamil Nadu, Maharashtra, Gujarat, and Karnataka are the top five states which are having more than 85% of the total organ donations. India has an organ donation rate of about 0.52 per million population, and whereas if we compare it with Spain, then about it has the highest in world, 49.6 per million population.
What is the need to increase deceased donations? Of course, about 1.5 to 2 lakh people need a kidney transplant every year, but only 8,000 get it. So also, with increasing lifestyle diseases, the demand is on the rise. Also, once a person dies, then of course the precious resource in the form of their organs get wasted. Nearly 1.5 lakh people die in road accidents. Their organs can be donated, but it cannot be done because of certain lacuna, like legislations and societies disapproval. So the regulatory framework in India says, as per 1994, Transplantation of Human Organs Act of 1994, commercialization of organs is a punishable offense. Also, the National Organ and Tissue Transplant Organization, which is functioning under Ministry of Health and Family Welfare, coordinates all the activities associated with organ donation at national level. So the regulations say that, of course, if you are registered to be an organ donor, even once you die, your family will have to give the consent. If they deny the consent, then of course the organ will not be harvested. Whereas in Spain there is an opt-out system in which every person is presumed to be an organ donor until or unless he specifies and goes to the hospital and signs a form that I do not want to be a donor. Okay, so this is a public psyche, that if you are signed as a donor, if you would not generally go to the hospital and opt yourself out. Okay, that's why Spain is having highest organ donation rate in the world. India is also lacking the number of medically qualified transplant coordinators, which generally coordinate the entire activity for the patients and the families after the transplant. Also, India does not have a very good transport network, so that we fail to create green corridors, which are necessary to transport the organs necessary for transplant. Also, apart from that, there is societal disapproval. Also, because there is no awareness, people are not aware about the benefits of organ transplant, so they do not get themselves registered as donors. So the next topic is Anti-Maritime Piracy Bill of 2019. This topic is important for your economy and governance section both. So Anti-Maritime Piracy Bill has been passed by the Lok Sabha recently. What was the need of this bill? Of course, in 1982, UN clause has defined piracy to include any act of violence, detention, or destruction committed for private needs or private ends against persons or property on board of a ship. So, as per International Maritime Organization, 84 acts of piracy were committed between 2018 and 2019. India is not having any legislation for piracy, and we resort to the IPC 1860, and we use the provisions of armed robbery to deal with piracy. But what is the problem here is that IPC only extends to the jurisdiction of India. So it means that only up to territorial waters of India we can use the provisions of our law to implicate people who are involved in piracy. But in 1995, India ratified the UN clause, so that's why it became important that we sign this anti-maritime piracy bill. So, what are the highlights of this bill? It will allow India to take action against piracy in the high seas where India does not have a jurisdiction. It also defines piracy. It also includes piracy provisions like inciting and intentionally facilitating such acts of violence, and it for participating in piracy, up to 14 years of imprisonment given the provisioned, and for causing piracy or for deliberately committing an act of piracy, life imprisonment or death is sought. So these are also the issues. Mandatory death penalty, of course, the Supreme Court is not very happy about it. It says that it is unconstitutional. Similarly, how would you define if the person has participated in a piracy or he has deliberately committed it? So for that, this overlapping circumstances would occur, and you would have to define it clearly in the law.
So the next topic is historic biodiversity deal. So historic biodiversity UN biodiversity agreement has been signed by 190 countries to protect 30% of the planet by 2030. It is also called the Kunming Montreal Global Biodiversity Framework. The aim is to raise about 200 billion by 2030 for biodiversity from a range of sources. Um, uh, up till 2025, about $20 billion annually would be mobilized, and this would be increased to $30 billion each year by 2030. The aim is to also reduce harmful government subsidies which are causing depletion of biodiversity worth 500 billion annually, and the aim is also to monitor and report after every 5 years regarding the progress made by individual parties. So, what is the Kunming Montreal Global Biodiversity Framework, which is very important for us? So, it is giving 23 targets, whereby the aim is to protect 30% of land and 30% of coastal and marine areas by 2030. So, basically, this is the 30 by 30 target. Uh, for the large companies and financial institutions, they will have to mandatorily uh, inform the how they are operating, how their supply chains are functioning, so as to make also as to get information regarding the biodiversity loss that they are making. Similarly, subsidies that or that deplete biodiversity will be identified by 2025, and they must be at least reduced by $500 billion annually by 2030. So similarly, when we discussed about this topic, I think 1 or 2 days back, there was a proposal that pesticides and highly hazardous chemicals must be reduced by two-thirds, but in the final agreement, at least one these must be reduced by one half only by the individual countries. So, what is United Nations Biodiversity Conference? So, it led to the Convention on Biological Diversity during the Rio Earth Summit of 1992, and the first COP was held in Bahamas in 1994. And what we have achieved so far, of course, incorporation of biodiversity values in our national accounting systems, like the NCAVES project, which was signed by UNEP with countries like Brazil, India, China, Mexico, South Africa. And there is also a decline in the rate of deforestation by about one third in 2020 as compared to the last decade. We have also mobilized double financial resources for the biodiversity protection. Cartagena Protocol has been signed, Nagoya Protocol has been signed, even HE targets were signed. Of course, we did not achieve it, but still there was an effort between 2011 and 2020 to save biodiversity. About 196 countries are party to it. US is notably absent, and about the COP15, it was the first phase of it was held in online mode in October 2021, but it was supposed to happen in Kunming in China, and the second part was held recently in Montreal. That's why the name is Kunming Montreal Global Biodiversity Framework. So the next topic is Commission for Air Quality Management. This topic is important for our environment section. So due to sudden spike in overall air quality index of Delhi, graded response action plan will come into force again. So what is graded response action plan? So it is kind of emergency measures which were first notified in January 2017 by Ministry of Environment. The stage 1 is activated when the AQI is in the poor category, but we can see that it has reached 410 level, which means it has reached the severe category. Now, of course, the severe actions would be emergency measures would be taken. So who decides it? Of course, the CAQM would be deciding these emergency measures. So CAQM, the Commission for Air Quality Management, is a statutory body headed by a government official of the rank of secretary or chief secretary. It also has 5 ex officio members nominated by the respective state governments of Delhi, Punjab, Haryana, Rajasthan, and Uttar Pradesh. It also has 3 full-time technical members, 3 members from NGOs, and technical members from CPCB, the Central Pollution Control Board, ISRO, and Niti Aayog. So basically, they indulge in restricting activities which influence air quality. They investigate and conduct research regarding how environmental pollution can be curbed to make the air pollution low. And they also inspect and regulate any person or authority which is involved in the air pollution exercise.
So the next topic is surety bond insurance. This topic is important for your economy section. So Union Minister for Road Transport and Highways has recently launched the first ever surety bond insurance product in India. So what is a surety bond insurance? So let's suppose that I am a contractor. I have there are several circumstances which affect my obligation if I would be able to make a bridge for the government or not. So for that, what I would do is I would buy this surety bond insurance. So what would be a surety bond insurance? I would pay an insurance company that in case I fail to perform my duty due to any reason, due to anything that due to any particular reason, you would pay the to the government which has given me this contract to build this bridge. And in case of any default from my side, in case I fail to construct this bridge, of course this insurance company would pay the government. So in that case, of course, everybody is at profit. I am a contractor. I have several circumstances due to which I would not be able to fulfill my project. Also, the government also gets the benefit in case the principal, that is the contractor, if I fail to make the bridge, then of course the government would get the money. Okay, so insurance company also gets the money because of course not every time a contractor would fail to perform its duty. So this is a surety bond insurance scheme which is very beneficial for all parties. So it provides a security arrangement for infrastructure project, and it helps in reducing the contractor's debt also. Okay, why? Because if I am a contractor, if I fail to perform the duty of constructing the bridge because of any reason, then in that case, of course, I had to pay to the government because I failed the contract. In that case, now the insurance company is paying, so I am also saved. Also, the government is saved. Government as an obligee, because the if the project is not completed, the government would get the money for it. So the next topic is INS Wagir. This topic is important for the security section. The fifth submarine of Project 75 Kalvari class of submarines has been delivered to the Indian Navy. It was launched in 2020, and it started its sea trials in 2022. It has superior stealth features, and last Scorpion class submarine Vakshir is remained now, and it will be delivered to the Indian Navy by end 2023. So with it, the entire Project 75 would be complete. And this Project 75 uh, was being functioning under the Mazgaon Dock Limited, uh, with a technology transfer agreement with Naval Group of France. All the submarines have been delivered, but the Vakshir submarine, INS Vakshir, remains, and it will be delivered by end of 2023. So the next topic is National Testing House. This topic is important for your governance and economy section both. So National Testing House will also begin testing facilities for EVs and EV charging systems by next fiscal year. So it started functioning in 1912 as Government Test House at Alipur, that is in Calcutta, and currently it functions under Ministry of Consumer Affairs, and specifically under the Department of Consumer Affairs. It has registered itself as in the government e-marketplace as testing and calibration service. Apart from that, it also gives services for water testing, fertilizer testing, etc. for the government, of course. So these were our topics for today. We'll meet next time with new topics. Until then, goodbye and take care.